अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। टुडे इज फ्राइडे। हैप्पी जुम्मा, जुम्मतुल मुबारक। और आज की वीडियो में आईएलटीएस का स्पीकिंग कंप्लीट टेस्ट। अगेन आई एम गोना बी द स्टूडेंट एंड आमना इज गोइंग टू बी माय एग्जामिनर और टीचर। So we have from book 10 to 20 in front of us, and I think Amna has selected a test and book 15. Okay, so I do not know about the test कि ये मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछने जा रही है। क्यों आमना ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, ये हम इसलिए रखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकें कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आईएलटीएस के पेपर के अलावा भी कैसे इंप्रूव करना है। और दूसरा, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि इफ आवर टीचर्स कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अस एज अ स्टूडेंट, तो हम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एलजी में बच्चों को प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक सेंस पे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यस आमना। Okay. This is your eye speaking test. So I am going to start part one. Are you ready for this? I am ready. Okay. How often do you wear jewelry? Well, being a male, I do not put on, necklace, rings. Sometimes I put on watch, a wristwatch, especially when there is a wedding. But you can say that I am not into fashion and I do not like to put on expensive, you can say, a ring or watch. Okay. What type of jewelry do you like best? Uh, if I wanna see someone is wearing a beautiful necklace or earrings, if it is female or you can say a woman, then I really like and I appreciate whenever someone puts on this kind of jewelry. When do people like to give jewelry in your country? To be very frank, in weddings, when there are marriages or there are functions, sometimes in birthdays, parties, people like to give this gift as a token of love. In Pakistan, as you know, the gold is very expensive nowadays. You will have to spend $500 to $700 to buy a simple ring. So now such kind of situations are few and far between. Have you ever given jewelry to someone as a gift? Yes, I have given rings to my wife many times when she has her birthday or she is traveling with me somewhere. So I have to buy it to make her happy. And I also give such kind of gifts to my near and dear, to my kith and kin, to my friends. Okay, next part two. Describe an interesting. So ये हमारा पार्ट वन खत्म हो चुका है और आमना ने वो टॉपिक सेट किया है कि अगर आईएलटीएस के रियल टेस्ट में ये वाला टॉपिक वो किसी मेल से पूछता, तो अगर वो कहता ना कि आई एम नॉट इनटू सच काइंड ऑफ फैशन, तो एग्जामिनर जो है ही और शी इज गोइंग टू चेंज द टॉपिक। जैसे एक म्यूजिक का टॉपिक होता है ना, और एग्जामिनर आपसे ही कहता है डू यू लाइक टू लिसन टू द म्यूजिक, और आप कहते हैं नो आई डू नॉट लाइक टू लिसन टू द म्यूजिक, तो फिर एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे वो आपसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स के क्वेश्चन करेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा हॉबीज के क्वेश्चन कर लेगा, फ्री टाइम एक्टिविटीज के कर लेगा कि लेजर टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैंने ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर नो में दिया है, लेकिन शॉर्ट नहीं दिया, मैं कुछ ना कुछ एड अप करता रहा हूँ। ओके, राइट नाउ Describe an interesting TV program you watched about a science topic. What science topic this TV program was about? When you saw this TV program, what you learned from this TV program about a science topic? And explain why you found this TV program interesting. You have only 1 minute to prepare your cue card. राइट, आमना ने मुझे जो क्यू कार्ड दिया है, इट्स अबाउट डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम अबाउट साइंस और साइंटिफिक इन्वेंशंस। राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्यू कार्ड। अब ये जो 1 मिनट स्टूडेंट्स को मिलता है ना, दे मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम, दे मस्ट अवेल देमसेल्व्स दिस चांस एंड दे मस्ट जॉट डाउन सम पॉइंट्स। आजकल कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं कि आपने फौरन बोलना शुरू कर देना है, एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होगा जी स्टूडेंट ने तो फर बोल दिया। ऐसा नहीं है, टेक योर टाइम, दिस इज योर टाइम। एंड इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स दे मिसगाइड द स्टूडेंट्स कि आपने फिल्म दी स्पॉन्टेनियस कहना आई एम रेडी। यू आर नॉट अंडरटेकर ऑफ द लैंग्वेज और जॉन सीना। टेक योर टाइम। एग्जामिनर ने आपको 1 मिनट दिया हुआ है, यू विल हैव टू टॉक अबाउट द टॉपिक फॉर 1 मिनट और 2 मिनट और अनलेस अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू। लेकिन उससे पहले आपको 1 मिनट दिया जाता है। और हमारे स्टूडेंट्स WH वर्ड्स के जो प्रॉम्प्ट्स और हिंट्स होते हैं ना, इनको भी नहीं पढ़ते हैं कि व्हाट साइंस टॉपिक, कौन सा टॉपिक था ये, व्हेन यू सा, कब आपने ये प्रोग्राम देखा, और व्हाट यू लर्न, और क्या आपने सीखा। एक्सप्लेन व्हाई यू फाउंड द टीवी प्रोग्राम इंटरेस्टिंग। हमारे स्टूडेंट्स फिर 2 मिनट में इनको दोबारा नहीं देखते हैं। अब आप लोगों ने प्लान कैसे करना होता है, यू हैव पेंसिल एंड पेपर, आप जॉट डाउन कर लें फौरन कि ये मैंने किस चैनल में देखा था, लास्ट ईयर देखा था, किस चीज के मतलब था। उस पे आप अपनी आसानी के लिए लिख लें ADJ कि मैंने 1-2 एडजेक्टिव बोलना है, लाइक ये वर्सटाइल था, ये मैचलेस था, ये यूनिक था, ठीक है, ये बहुत अच्छा था। तो आप ADJ से आपको क्या होगा कि आपको रिमाइंडर रहेगा कि मैंने एडजेक्टिव्स को यूज करना है। इसी तरह आप लिंकर्स का वर्ड लिख लें। लिंकर्स का वर्ड आपको लिखने का क्या फायदा होगा कि आप जो है वो एंड की बजाय एक मतलब मोर ओवर बोल देंगे, या फर्दर मोर बोल देंगे, या ऑन द अदर हैंड बोल देंगे, या टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोल देंगे। आपको पता होगा
कि मैंने कोई ना कोई लिंक इस्तेमाल करना है। आपको पता चल गया कि 1 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग टीवी प्रोग्राम you watch about science topic. Well, being a science student, I have watched many programs related to scientific invention, especially when I used to go to the college and I was the student of FSC. You know, I had to study about physics, chemistry, and subject like that. So 3 years ago, I had watched a program when ChatGPT was not so popular in Pakistan, and I had watched that there would be driverless cars in the future, and it was very interesting program. I was watching with my siblings, and we spent 3 to 4 hours, and we had discussed that would there be driverless cars in the future. And in that program, they have claimed that in future robotics would be so common that there would be no teachers in the classroom and AI will be teaching. I think it has become true as today is 2026 April. We are talking about such invention that there are now cars which are driverless and they can pick the passenger and AI is controlling them. Moreover, in that program, I had seen that the speaker has explained about the scientific invention beautifully and masterfully. The graphics were excellent. It was matchless, amazing, and fabulous program about the scientific invention. In that program, the speaker has told us that how science has helped us for the last 2 decades. Moreover, in that scientific program, there were pros and cons of scientific methods. Like if science is giving us benefits, on the other hand, there are some disadvantages that were discussed in that scientific program I watch in the channel in Pakistan. The name of that channel is Scientific Invention, and the host is Asad Aslam. He is very popular. So, to cut the long story short, it was very interesting and above all, full of information program. It was very informative and we enjoyed ourselves. तो इस तरह आपने आमना देखा है कि हमने 2 से 3 मिनट से ज्यादा इस पे बोल लिया है और आपने देखा है कि हमने रेलिवेंट वोकैब यूज किया है। ऐसा नहीं आपको लगा कि ये वाली वोकैब सर हर क्यू कार्ड में बोल लेते हैं या ये कोई वैरायटी नहीं नजर आ रही है या मेमोराइज था या क्रैमिंग की हुई थी, पैरेट लर्निंग की हुई थी, मगअप चीजों को किया हुआ था, रट्टा लगाया हुआ था। पॉजेज आपने देखा है कि बहुत ज्यादा लिए गए या आपको ये नहीं लगा कि कहीं आप आके सर रुक जाएंगे। ऑलमोस्ट आप जब रिकॉर्डिंग को देखेंगे ना तो ये मोर देन 2 मिनट्स होगी। और आपने देखा मैंने प्लान भी हमेशा अपने साथ रखा है कि मैंने साइंटिफिक इन्वेंशन के लास्ट पे आके ना डिसएडवांटेजेस पे बात करना शुरू कर दी, क्योंकि आप मेरे एग्जामिनर थे तो आई वाज होपिंग कि आप मुझे स्टॉप करवाएंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे स्टॉप नहीं करवा रहा, एग्जामिनर इज हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफी, तो वो आपकी स्पीकिंग को लंबा कर रहा है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। यू मस्ट हैव द प्लान बी। और मैंने रेपुटेशन भी आइडियाज की नहीं किया। एक बात अगर मैंने आपको ड्राइवरलेस कार्स की बता दी है तो उसके बाद मैंने फौरन प्लान रखा हुआ था कि मैं रोबोटिक्स का कुछ बता दूंगा आपको, मैं आपको एआई का कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर मैंने ये प्रोग्राम सिबलिंग्स के साथ देखा तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि मेरे साथ कौन सा था। फिर ये प्रोग्राम किस चीज के मतलब था, मैंने आपको उसका भी आंसर आपको दे दिया। और इसमें मैंने क्या सीखा, मैंने आपको उसका भी आंसर दे दिया। राइट, आप देख रहे हैं कि मैंने क्यू कार्ड के जो हिंट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, वो अपने क्यू कार्ड की तरफ दोबारा नहीं देखता है। इट्स योर राइट, यू कैन सी द क्यू कार्ड, और जो आपने प्लान अपना 1 मिनट में 60 सेकंड्स में जॉट डाउन किया होता है आप उसकी तरफ भी 12 दफा देख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू स्पीकिंग पार्ट 3। पार्ट 3 के मतलब मैं एक चीज कहता हूं कि पार्ट 3 जो है ये आपका डिस्क्रिप्शन से डिस्कशन की तरफ जा रहा है, डिस्कशन की तरफ जा रहा है। कहां से, डिस्क्रिप्शन से। अब इसमें पार्ट 3 को समझने के लिए आप ये समझ लें कि ये आपका एक मिनी क्यू कार्ड है। मिनी क्यू कार्ड है, यानी क्यू कार्ड पे अगर आप 2 मिनट्स बोले हैं तो इसके एक आंसर को आपने 40 से 60 सेकंड्स तक लंबा करना है टू गेट 7+ बैंड। Now the biggest problem in Pakistan is that most of the students speak very short answer in speaking part 3, and the examiner asks them 7 to 9 question and the test is over with the span of 5 to 7 minutes. The only reason is that the students are answering in a very short way, बड़ा ब्रीफ कर देते हैं। You will have to explain with examples. आपको कोई कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक इफ को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको भी आपको यूटिलाइज करना पड़ता है इसमें। तो अब स्पीकिंग पार्ट 3 में एग्जामिनर अनाउंस करता है लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट। एक टॉपिक लिखा होगा वो आमना मुझसे पूछने लगी है। How interested are most people in your country in science? Well, most of the students are taking interest in science. You can say that people have been taking interest in scientific methods and invention for the last 3 to 4 decades. As science is everywhere, we are living in a digital age and the significance of science cannot be ignored. In Pakistan, schools start teaching scientific subject at very early age. In grade 3, you can find a compulsory book that is related to science. And in Pakistan, if you are going to read humanities subject like education, so it has less values. But if you are the student of science and your major is physics, chemistry, or biology or mathematics, you are going to get good score.
and you are going to get admission in good schools and colleges, and in practical and pragmatic life you will get definitely a good job. So people are taking interest, they are learning about scientific methods at home. Women are very keen to take interest in scientific methods, as they have to use the washing machine for their laundry, they have to take the juice from the juicer, so they know about the gadgets and devices and tools in Pakistan. So you can say that people have great interest in scientific inventions. How do you think children today might be better at science than their parents? To be very frank, children are much better due to the scientific method, as they have good health. Due to the scientific method, they are getting medicines. They know about their diets. They know about the good food and bad food. They know about proteins. They know about their guts. And they have cars. They have fast moving trains. They have machines. They have computers. Moreover, they have each and everything due to the scientific method, and their ancestors and forefathers did not have. They used to travel, and it used to take 3 to 4 days to reach Lahore from Sialkot, but now they can reach Lahore within 1 or 2 hours. It is due to scientific method. So children are far better than their ancestors. How do you suggest the public can learn more about scientific developments? There should be seminars. Moreover, in schools and colleges, every student should read scientific subjects and methods. There should be more labs in Pakistan, and it is the first and foremost duty of government to create interest among the public and masses, to have more competition, to have more exhibitions about science. In this way, they can learn. Example questions. Can Right. we? What do you think are the most जी, ये जो important? एग्जाम्पल क्वेश्चन आपने कहे हैं ना, इसमें एक चीज आपने याद रखी है, जहां डिस्कशन टॉपिक्स लिखे हुए ना, उसमें एक टॉपिक एग्जामिनर बोलेगा, लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड द पब्लिक. दूसरा टॉपिक भी उसने रखा हुआ है, साइंटिफिक Discoveries. डिस्कवरीज के मतलब उसने टॉपिक रखा हुआ है. तो ये एग्जामिनर टॉपिक्स पार्ट 1 में भी आपको बताएगा कि लेट्स टॉक अबाउट फैशन, लेट्स टॉक अबाउट हॉबीज, ओके. और आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पार्ट 3 में भी करने से पहले जो है टॉपिक को अनाउंस करेगा. दिस इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, और ये एग्जामिनर ने करना होता है. और यस, आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं, बल्कि 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं, 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पूछे हैं, और 3 क्वेश्चन आगे आप पूछने जा रहे हैं. तो 6 क्वेश्चन आपके पार्ट 3 के होते हैं. और आपने देखा है कि पार्ट 3 के जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो इतने लेंथी हैं कि आपको आराम से सुनना पड़ता है, और मैं उसको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता रहता हूँ. ठीक है, आप इसका स्पैन ऑफ टाइम जब देखेंगे ना, तो कोई भी आंसर 40 सेकंड से लेस नहीं होगा, और सम टाइम ये 90 सेकंड से भी एक्सीड कर जाएगा. ओके, यस. This topic is scientific discoveries. What do you think are the most important scientific discoveries in the last 100 years? As a student, I think IT and AI, because due to computer now, it is very easy to take the test at home. It is very easy to take online classes. Moreover, due to AI, artificial intelligence, now it is very easy to do research. It used to be very difficult. You had to read a lot of books in the past, but now due to artificial intelligence, what you need, you just know how to use it, and you can do your MPhil or PhD. Some people will say that the most significant scientific invention is wheel or car or jet. I do not agree. I would say that information technology, in terms of computers, laptops, smartphones, mobiles, tablets, tools, gadgets, microphone, even this mic, even this camera, and then after that, artificial intelligence. You know that we have a graphic designer in the past, but now it is very easy to create a post due to IT and AI. So they are the most significant inventions of the science. Do you agree or disagree that there are no more major scientific discoveries left to make? To be very frank, I disagree. In future, as I have told you that I had watched a program about the driverless cars, there will be more discovery. This is just the beginning. This is the first step, and you are going to see revolutionary changes, and that would be positive. There will be no destruction, like there will be no blasting, there will be no nuclear weapons, but there will be robotics. You do not need a housemaid in America, because they have a housemaid in terms of tool. You do not need a sweeper, because they have a machine that can clean your floor better than 3 or 4 servants. So there will be more inventions. There will be no books. Even your brain can read the book in future. So I think this is the beginning of the scientific discoveries and inventions. Who should pay for scientific research, governments or private companies? Both. In terms of getting research or getting more discoveries,
I think this is the first and foremost duty of the government. If the government is public and they are thinking about a welfare state, for example, if the roads are broken, unpaved, this is not a scientific method. If you are going to use the scientific method, the government is going to invest the money on the roads, on the schools, in hospitals, in college. Secondly, there are some organizations, some companies which want to improve the living standard of the people. So if the companies are rich, they must help the people, they must go to the colleges and universities in order to motivate the students. There should be more scientific exhibitions. So government is going to play its vital role in this regard. Okay, this is the end of your speaking. What do you? ठीक है, आप ये सारी स्पीकिंग का स्पैन ऑफ टाइम देखेंगे ना, तो ये 12 से 16 मिनट से बब होगा इस डिस्कशन को निकाल के, जो मैंने और आपने की है। जो मैंने आंसर दिए हैं ना, वो 10 मिनट से ज्यादा होंगे। अब जो ऑफिशियल टाइम है ब्रिटिश काउंसिल का, आईडीपी का, एयू का, वो 12 से 15 मिनट्स है। अगर कोई बच्चा एग्जामिनर के सामने 15 मिनट टिक गया, समझ लें कि वो अंडरटेकर है, वो जॉन सीना है। और अगर बच्चे का टेस्ट 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाता है, उससे उसने सवाल पूछा था, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? यस आई लाइक ट्रैवलिंग। हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल? वंस इन अ मंथ। डू यू लाइक टू ट्रैवल अलोन और विद फ्रेंड्स? अलोन। इसका मतलब है ये तो 3 मिनट में अपना सारा टेस्ट खत्म कर देगा। तो द मोर यू स्पीक द बेटर इट इज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।